Given the recent poll debacles by the leading party in opposition bloc, the Congress, now friction in opposition is out in the open. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's recent remarks over leading the opposition bloc have sparked a massive debate. Bengal Chief Minister expressed dissatisfaction with the functioning of INDIA, signalled her intent to take charge of the alliance if given the opportunity, and added that she would ensure smooth functioning of INDIA from Bengal itself. India allies, meanwhile, spoke in differing voices on Mamata Banerjee's remarks that she was ready to lead the coalition. Mamata Banerjee, you see, when asked about this kind of question, she replied that my priority is Bengal, but I want a platform which will be alternate to Bharatiya Janata Party. तो इसीलिए Mamata Banerjee took initiative and formed a bloc, that is India. And now her priority is Bengal. This is completely internal party matter. I can't comment on that. जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल, वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। ममता बनर्जी का बयान आया है, कह रहे हैं कि जो अभी इंडिया ब्लॉक को संभाल रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि उनसे नहीं संभाल पा रही है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं संभाल सकती हूं। सबका निशाना एक तरफ ही क्यों आता है भाई? जो मजबूत होता है उसी पे निशाने लगते हैं। लगाओ निशाने में क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया अलायंस का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है। इंडिया अलायंस का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। इंडिया अलायंस का मतलब है जितने भी घटक दल हैं हमारे, उन सब का, और उन सबकी सहमति से ही कोई लीडर बनेगा। अभी समाजवादी पार्टी किसी के पक्ष में नहीं है। जो लीडर हैं वो हैं। कल कौन बनना चाह रहा है, इस पे बैठ के इंडिया अलायंस के सभी दल, चूंकि जो दो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं उत्तर भारत के, वो बिहार का है और दिल्ली का है। इन दो स्टेट के चुनावों में बहुत अच्छी रणनीति के साथ इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना पड़ेगा और बीजेपी को, एनडीए को हराना पड़ेगा। And we've got breaking developments coming in. Clearly, the parties within the INDIA bloc have decided to pick sides. The latest one being NCP-SP. Supriya Sule, the MP from Sharad Pawar's party, has said that if Mamata wants to take a bigger role in the alliance for the sake of the alliance, they are supporting her. Mamata Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. That is just one more voice of no confidence in probably Congress and Rahul Gandhi's ability to be the big brother in the opposition alliance. That is the allegation that is also coming from the BJP. इसका उत्तर जवाब हमसे क्यों आप मांग रहे हैं? ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता सकते हैं। तृणमूल का समय अभी नहीं है। तृणमूल सभी का साथ तृणमूल था, ऐसा कोई पार्टी नहीं है तृणमूल जिसको ठगा नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता या हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता तृणमूल सरकार के ऊपर, तृणमूल पार्टी के ऊपर और खासतौर के ममता बनर्जी के ऊपर कोई उसका आस्था नहीं रखता। 2 साल के बाद पश्चिम बंगाल तो क्या, हिंदुस्तान में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसका ऊपर पीएचडी होगा, जो वेदर तृणमूल कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। देखिए, आज ये साबित हो चुका है कि इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व, प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया अलायंस का पूरा नेता, जो पूरा का पूरा जो गठबंधन है, वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं।
Once again, a no confidence motion has been passed by TMC against Congress party. We have seen that in the parliament session too. TMC leaders said that after the loss in Maharashtra and Haryana, now Mamata Banerjee says that she formed the India Alliance. But what can she do if the state of affairs can't be managed by the leadership, which is Congress? This is a direct attack on the Congress and the lack of faith she has in the Congress party. She also said that if given an opportunity, she would lead the India Alliance and take everyone along and ensure smooth functioning. This is a direct attack on Congress's leadership. It shows that there is no mission in India Alliance. It is all about ambition and position. ये जो ब्लॉक है जिसे कहते हैं आप इंडिया ब्लॉक या जो भी, उनको अच्छी तरह से इस बात से का एहसास है कि कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए जो है वो गठबंधन के शीर्ष पर ही पहुंच जाओ कि इसमें खानदान तो अनेक है लेकिन ख्वाहिशें एक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो पंगा दिखाई पड़ रहा है ये उस ख्वाहिश का है कि कम से कम इस टूटे फूटे गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पे दिल्ली में पहुंचने के लिए तो अभी जो है वो कई दशक तक वैकेंसी है नहीं। It is very, very interesting what people are saying, and it is even more interesting what is being left unsaid, because if we go through the reactions one by one, the most significant one coming from the Congress party, Udit Raj has spoken out, where he earlier, you heard him saying that TMC was not a success beyond the realm of West Bengal. How can a leader of a regional party think about leading a national alliance? However, there are those like the other allies, like the Samajwadi Party, that hasn't clearly negated the possibility of a discussion over this matter, even though it says that there are other priorities for Samajwadi Party in particular, that they want to focus on the upcoming elections, which is Delhi and Bihar, instead of discussing who is going to lead the alliance. But so far, no reaction from any of the allies says that this proposal is not on the table. Earlier also you heard the peripherals, the leaders from the TMC, making noises around how they would want their party chief to lead the INDIA, which is understandable because every single party that forms this opposition alliance is justified in asking and wanting for their leader to be the chief of a bigger alliance. However, this time, Mamata Banerjee probably for the first time ever has said it in first person. She said it herself that while she is not willing to move out of West Bengal, since her state remains her first priority, she will be okay if given the opportunity to manage the national alliance while staying in West Bengal itself. Given the recent poll debacles by the leading party in opposition bloc, the Congress, now friction in opposition is out in the open. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's recent remarks over leading the opposition bloc have sparked a massive debate. Bengal Chief Minister expressed dissatisfaction with the functioning of INDIA, signalled her intent to take charge of the alliance if given the opportunity, and added that she would ensure smooth functioning of INDIA from Bengal itself. India allies, meanwhile, spoke in differing voices on Mamata Banerjee's remarks that she was ready to lead the coalition. Mamata Banerjee, you see, when asked about a question, this kind of question, she replied that my priority is Bengal, but I want a platform which will be alternate to Bharatiya Janata Party. तो इसीलिए Mamata Banerjee took initiative and formed a bloc, that is India. And now her priority is Bengal. This is completely internal party matter. I can't comment on that.